So today we're going to quickly go over muscles of mastication. Muscles of mastication से हमें क्या समझ आती है? Mastication का क्या मतलब होता है? खाना चबाना. ठीक है. So muscles of mastication are responsible for chewing of the food. ठीक है. Classify हम जब उन्हें broadly करते हैं muscles of mastication को, तो we have the primary muscles and we have accessory muscles. Primary muscles are 4 muscles. ये सारे किससे supply होते थे? कौन सी nerve से? हाँ जी, कौन सी नर्व से होते थे गाइस? Mandibular nerves. From the mandibular nerve, ठीक है. The medial pterygoid was from the anterior division and the other 3 were from the the medial pterygoid was from the trunk and the other 3 were from the anterior division. Guys, start participating, okay, so that I wake up too. Then we have like 4 accessory muscles. Okay, the 4 accessory muscles we have are your digastric or stylohyoid, the mylohyoid and the geniohyoid. Digastric तुम लोगों को पता है anterior posterior bellies होती हैं और किस तरह करके वो loop around करती हैं. पता है ना कि posterior वो जिसकी loop होती है बीच में और उसके अंदर आके anterior belly से posterior belly तक जाता है. Posterior belly पीछे mastoid process तक जाता है और एंटीरियर बेली आगे कहाँ पे अटैच्ड होता है? और जाओ, एंटीरियर बेली आगे कहाँ अटैच्ड होता है? अनम्यूट योरसेल्फ. मैंडिबल में होता है. कहाँ पे होता है मैंडिबल में अटैच्ड? मेंटलिस. डाइगैस्ट्रिक फोसा में होता है मीडियल साइड पे. अभी तो हमने किया है, कल ही तो किया है. डाइगैस्ट्रिक फोसा में अटैच होता है. एंड देन जो पोस्टीरियर बेली है वो कहाँ? मैंडिबल पे अटैच होती है, स्कल पे अटैच होती है. कहाँ अटैच होती है? Mastoid process. Mastoid process पे. So wake up guys, get some coffee, throw some water on your faces, get up, leave your pillows, उठ के बैठो. मैं जब पढ़ाने भी बैठती हूँ तो मैं बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ाती किसी को. Anyway, the second thing is the stylohyoid muscle. The stylohyoid muscle, it कहाँ से कहाँ तक होएगा? Thyroid process Thyroid process से hyoid bone तक. Is it a suprahyoid or an infrahyoid muscle? suprahyoid. सुप्राहायोइड मसल्स हैं. ये सारे हायोइड से ऊपर के मसल्स हैं. डाइगैस्ट्रिक भी हायोइड से ऊपर है, स्टाइलोहायोइड भी, क्योंकि देखो इनके एंड में हायोइड जो आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये हायोइड पे जाके अटैच होते हैं, इंसर्ट होते हैं, ओरिजिनेट इन पॉइंट से करते हैं. स्टाइलोइड प्रोसेस से जो कि हायोइड से ऊपर है, माइलोहायोइड लाइन जो कि माइलोहायोइड जो मैंडिबल जो कि स्टाइलोइड से ऊपर है, जीनियोहायोइड फ्रॉम द जीनियल ट्यूबरकल जो कि अगेन हायोइड बोन से ऊपर है. बिकॉज ये सारे सुप्राहायोइड मसल्स हो गए. डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलो, माइलो, जीनियोहायोइड्स आर सुप्राहायोइड मसल्स व्हिच आर द एक्सेसरी मसल्स जो कि प्राइमरी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के साथ काम करते हैं. बस ये याद रखना है कि अगर कोई मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन पूछ ले, नॉर्मली ओरिजिन इंसर्शन जब पूछते हैं तो आपसे इन प्राइमरी का पूछते हैं. बट इफ यू जस्ट मेंशन के सेकेंडरी भी कोई या एक्सेसरी भी मसल्स होते हैं, ठीक है, यू कैन जस्ट मेंशन. फंक्शनली किस तरह क्लासिफाई करते हैं? ये तो क्लासिफिकेशन होगी प्राइमरी और एक्सेसरी के बेसिस पे. फंक्शनल क्लासिफिकेशन जो फंक्शन होता है मैंडिबल का, एक मैंडिबल का फंक्शन है कि वो जॉ एलिवेट करेगा यानी माउथ को क्लोज करेगा या ओपन करेगा? क्लोज. जॉ एलिवेट होगा, मुंह ऊपर जाएगा तो मुंह बंद हो जाएगा. जॉ एलिवेशन में माउथ क्लोज हो जाएगा. जॉ डिप्रेस होगा तो माउथ ओपन होएगा. ठीक है. सो जो मैंडिबल को ऊपर खींचते हैं, जो मैंडिबल को ऊपर खींचते हैं और मुंह को बंद करते हैं मसल्स, वो 4 हैं. वो आपकी चारों प्राइमरी मसल्स हैं, मगर जो चौथा प्राइमरी मसल है उसका अपर हेड है सिर्फ. ठीक है, ये बात याद रखनी. जॉ एलिवेटर्स जो है चारों प्राइमरी मसल्स हैं, मगर लैटरल टेरिगोइड का सिर्फ अपर हेड है जो जॉ को ऊपर खींचता है. जॉ डिप्रेसर्स में प्राइमरी से एक ही रह गया था जो लैटरल टेरिगोइड था, उसका लोअर हेड था जो कि जॉ को डिप्रेस करता है और मुंह खोलता है. ठीक है, लोअर हेड था. एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक, जीनियोहायोइड, माइलोहायोइड. अब ये सारे कहाँ जाके अटैच हो रहे हैं? ये सारे नीचे हायोइड बोन पे अटैच हो रहे हैं. तो जब ये खिंचेंगे तो जॉ जो है नीचे की तरफ आएगा. समझ आती है बात? इसलिए ये जॉ डिप्रेसर्स में आ जाते हैं.
Accessory muscles work as a jaw depressor because वो mandible से नीचे attach हुए हुए हैं, तो जब वो contract होंगे उनकी motion between the mandible and the hyoid है, whereas these muscles ये originate और insert सब कुछ mandible के आसपास ही होते हैं, ठीक है. So the jaw elevation के muscles ये हैं, depression के ये हैं, याद कर लो इन्हें. Moving on, साथ साथ नोट्स बनाया करो, दिमाग खुला करे तुम लोगों की, ज़बान भी खोलो और दिमाग भी खोलो. अच्छा मजहर, are you here with me? Please start reading. Yes, ma'am. The masseter is a thick, somewhat quadrilateral muscle consisting of two parts, superficial and deep. The fibers of the two portions are continuous at the insertion. The masseter muscle is somewhat the target of plastic jaw reduction surgery. जो ऐसा लग रहा है मैंने गूगल पे जो है ना, जब when I put a word in और फिर गूगल रीड आउट करता है उसे, तो ऐसा लग रहा है मैंने गूगल को पलटा दिया बैठने के लिए. It's a good reading. So the masseter is a thick, somewhat quadrilateral muscle. Quadrilateral shape होती है, quadrilateral वो shape होती है जिसके चार corners होती हैं, ठीक है. So quadrilateral चार sides वाला muscle है, consisting of two parts, दो parts हैं इसके भी, superficial deep. और the fibers of the two portions are continuous at their insertion. दोनों एक ही जगह, superficial deep दोनों एक ही जगह जाके insert होते हैं. और जिन लोगों के देखे कि बहुत वाइड से cheeks होते हैं, ठीक है, they have like a very wide, मतलब cheeks तो ऐसा जितने डेवलप नहीं कहेंगे, मगर they have very wide faces. हैं ऐसे लोग, कोई उनके faces यूं करके wide से होते हैं. I cannot think of any celebrity, but I had a classmate who was like that. जिनके बहुत वाइड से फेसेस होते हैं, those people have very well developed masseters, ठीक है. तो sometimes when you want narrow faces or narrow jaw lines, such people go for plastic jaw reductions of this muscle, ठीक है. This is the muscle that goes under plastic jaw reduction to give you the jaw line or a narrow face or a patla lamba face, ठीक है. So the muscle looks something like this. ये muscle किधर attach होती थी? On the mandible, on the lateral surface या medial surface पे थी रेमस के? Lateral. Lateral surface पे थी. You can even see it from the pictures that it is on the lateral surface. ये क्या है? ये क्या है guys? Where my cursor is at? What is that? Mandible foramen. ये mental foramen है, that's right. So on the lateral surface, ये यहाँ पे आके it attaches over here on the lateral surface. तो कितना बड़ा है ये, ठीक है. ऊपर जाके कहाँ पे अटैच होता हुआ नजर आ रहा है? lateral ramus पे भी, और यहाँ पे कहाँ अटैच होता हुआ नजर आ रहा है? zygomatic arch. zygomatic arch पे अटैच होता हुआ नजर आ रहा है. तो नेचुरली जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये मसल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये मुंह को बंद ही कराएगा ना, तो it'll become like a jaw elevator, ठीक है. ये jaw elevator बन जाता है because it is between the skull and it is with the mandible. तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इसके फाइबर्स, तो it'll try to pull the jaw up. अगर jaw नीचे हुआ हुआ, it'll try to pull the jaw back in its normal position. So this is your huge masseter. अब जिनका बहुत मोटा masseter होगा, अब ये इस बंदे का पतला सा है तो इसका पतला सा मुंह होगा. जिसका बहुत मोटे masseters होंगे इस एरिया में, उसका फेस भी वाइडर होगा इस एरिया से. Okay. So the origin is from the zygomatic arch and maxilla. The insertion is the coronoid process ramus of mandible. ठीक है. ramus of mandible पे भी जाके लगता है, थोड़ा सा coronoid process पे भी लगता है. Origin zygomatic arch से हो रहा है. और what do we know about the muscles के fibers? Towards which side do they move? Origin. Origin को. तो जब ये origin की तरफ move करेगा, जब ये origin की तरफ move करना शुरू हो जाएगा, तो what happens is that ये यहाँ से यूं fibers ऊपर की तरफ जाएंगे. जब fibers ऊपर की तरफ जाएंगे, तो obviously naturally jaw close होएगा. So you'll remember this picture in your mind and remember that it's a jaw closer. तो उससे याद हो जाएगा कि ये इसका origin है और ये इसका insertion है. और जब वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे लगता हुआ थोड़ा सा coronoid को भी लगता हुआ आ जाएगा. Artery supplies by the masseteric artery, nerve supplies by the mandibular nerve. Action is elevation and protraction of the mandible, but the primary action is the elevation. Actions को ज़रा सा study कर लेते हैं. Actions elevates the mandible to close the mouth and to occlude the teeth in mastication, ठीक है.
elevates the mandible to close the mouth, ये हमें पता है. Its activity in the resting position is minimal, rest पे कुछ नहीं कर रहा होता, और it has a small effect in side to side movement, protraction and retraction. ठीक है, थोड़ा सा effect protraction retraction में भी है, but major effect किस में है? Elevation में. Protraction retraction होती है थोड़ा सा आगे जाना mandible का और थोड़ा सा पीछे आना, बहुत आगे जाना नहीं, हल्का सा आगे जाना और थोड़ा सा पीछे आना, उसमें भी थोड़ी सी activity है. But the major one is this first one. Can we move on to the next muscle? Yes, ma'am. All right. Palpitation इसकी दिखाई हुई है कि you can put your fingers here and you can palpitate it under the zygomatic arch. Clinically अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं मसल को, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस बताई हुई है. पैल्पेट दोनों तरीके से कर सकते हैं. प्लास्टिक जॉ रिडक्शन सर्जरी का टारगेट होता है. हाइपरट्रोफी हो जाता है ब्रक्सिज्म में. ब्रक्सिज्म क्या होता है पता है तुम लोगों को? No, ma'am. People who have a constant habit of दांत चबाना, जो लोग रात को भी टीथ बाइटिंग तो नहीं से कहते, मतलब लाइक टीथ क्लेंचिंग जो होती है, जो आप दांत नहीं दबाते एक दूसरे के साथ दांत बजाते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड. आई हैड दैट हैबिट एज इन चाइल्डहुड. माय मॉम यूज्ड टू वेक मी अप इन द मिडल ऑफ द नाइट. और जो दांतों को क्या कर रही हो, जो दांत एक दूसरे के साथ रब करते हैं या दे हिट देम अगेंस्ट ईच अदर, दैट्स कॉल्ड द हैबिट ऑफ ब्रक्सिज्म. ठीक है, वो इनवॉलंटरीली you जो है you start doing that. So what happens is that the muscle goes into hypertrophy because of that. So and it's a very powerful muscle. You can tell it by the fact कि वो कितना मोटा looking और कितना बड़ा muscle है. It's a very powerful muscle. These are some clinical importances. Now we're on to the temporalis. This is the second primary muscle. Temporalis is a fan-shaped muscle. When we talk about fan-shaped muscles, temporalis should be the first muscle that pops up into our head, and the other one is in the tongue. तो उसको भी हम देख लेंगे. Okay, so temporalis. Yes, Mazhar, can you start reading, please? Okay, ma'am. The temporalis muscle, also known as the temporal muscle, also known as temporalis, is one of the muscles of mastication. It covers much of the temporal bone structure. It arises from the temporal fossa and deep part of the temporal fascia. It passes medial to the zygomatic arch and inserts onto the clinoid process of the mandible. The temporal muscle covered by the temporal fascia is also known as the temporal aponeurosis. The muscle is accessible on the temple and can be seen and felt contracting while the jaw is clenched and unclenched. Try doing this, guys. Can you try to do this? जो उन्होंने कहा है, keep your hands or keep your fingers on your temples और jaw को clench और unclench करो. Come on, let's do this. You feel it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is your temporalis. जब आपने jaw को clench unclench किया और आपकी fingers temples पे, so the muscle you feel in this region is the temporalis. It's a fan-shaped muscle and it arises from the temporal fossa. हम यहाँ पे temporal fossa पढ़ते थे ना, जो कि superior temporal line और पीछे जाके फिर towards the mastoid and the suprameatal triangle और आगे के frontal part of the, कौन से parts होते थे ये सारे? Maxillary process of the frontal bone, frontal process of the maxillary bone, इसकी आगे वाली boundary बनाते थे. यहाँ पे ये सारा fossa होता था, पढ़ा है ना ये सब हमने. इसके बीच में टीरियन होता था. Do we remember this? Yes. I want you guys to revise this too, because जब second substage होगी, जब third substage होगी, जब third and fourth substage होगी, so these topics that we've covered will be questioned again. Okay, I'm not teaching them, but Dr. Sonia says that they will be asked again. So those lateral norma lateralis and the pterygopalatine fossa, ganglion, and the temporal and infratemporal fossa will be included in the third substage. And because you've already studied it, so please do not say anything, क्योंकि उसके 3 दिन बाद दोबारा वैसे ही stage हो जानी है, तो बेहतर है अगर कर लोगे. So yeah, so it's arising from that region, from the temporal fossa, और वो जाता है medially to the zygomatic arch. यहाँ पे zygomatic arch होती है और medially जाके उसमें attach हो जाता है और coronoid process पे होता है. Like we studied के coronoid process पे बहुत ज़्यादा attach होता है, laterally कम होता है और medially बहुत सारा होता है. ठीक है, let's look at its origin insertion. Origin क्या है? From the parietal bone of the skull. अब ये सारे जो elevators है ना, ये ऊपर से ही arise हो रहे हैं.
ये ऊपर से इसलिए अराइज हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने एलिवेट करना है, तो ये अगर मूव टुवर्ड्स द स्कल ही करेंगे तो एलिवेट कर पाएंगे जॉ को. So it's from the parietal bone of the skull, parietal bone as in the temporal fossa, and is inserted into the coronoid process. So origin की तरफ move करेगा, ऊपर की तरफ jaw elevate करेगा. Arterial supply, deep temporal artery supplies the large muscle, nerve supplies the term trigeminal nerve. Trigeminal की आगे से temporal branch होती थी from the anterior division उससे. First pharyngeal arch से है. Clinical importance, sudden contraction of the temporalis will result in the coronoid fracture, which is rare. ठीक है, the coronoid process of the mandible. Ouch. The coronoid process of the mandible is not a very strong process. ठीक है, ये एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है ना मसल, एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा, एकदम से ऊपर को जाएगा तो ये वाला प्रोसेस जो है it can fracture off. Functions, elevations of the mandible, retraction of the mandible, crushing of food between the molars, posterior fibers draw the mandible backwards. It also is a contributor to side to side. Side to side में ये भी था. अब elevation, retraction, यही बात है. Backwards move कराना retraction ये. So look at it. इसकी position देखो कैसी है. यूं करके. तो अगर mandible आगे की तरफ गया होगा ना, तो ये इसे पीछे भी पुल कर सकता है, क्योंकि देखो the origin is coming from a little towards the back side also. ऐसे बिल्कुल ऊपर नहीं, अगर यहाँ पे कहीं होती और इसे खींचती तो ये सिर्फ एलिवेट कर सकती होती, मगर ये पीछे से थोड़ा सा खींच रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा और पीछे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा पीछे भी जाएगा, एलिवेट भी होगा रिट्रैक्ट भी होगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. पूछते जाओ जिसको साथ साथ ही क्वेश्चन होता है. Master, yes, please. We're on to the lateral pterygoid now. Can you please read the attachments? Okay, ma'am. It is thick muscle with two parts or heads. Upper head arises from the infratemporal surface and the infratemporal crest of the greater wing of sphenoid. The lower head arises from the lateral surface or the lateral pterygoid plate. Its fibers pass backwards laterally to be inserted into a depression, fovea, on the front of the neck of the mandible and into the articular capsule and the disc of the temporomandibular articulation. All right, so this one over here now, unlike the others were starting from here. हमने देखा कि वो जो था masseter था, it was originating from the zygomatic arch, and the temporalis was originating from the temporal fossa, और फिर वो नीचे आके mandible पे लगते थे. अब हम आगे एक muscle पे जो कि lateral pterygoid है. Now the lateral pterygoid comes from here, नीचे से arise हो रहा है. अब वो दोनों ऊपर से आ रहे थे, so the lateral pterygoid, we remember that they had two heads. It had two heads. It had an upper head and it had a lower head. और जो upper head था, what was that? Was it an elevator or was it a depressor of the jaw? Elevator. Elevator. ठीक है? Upper head was the elevator of the jaw and the lower head was the depressor of the jaw. और upper head की insertion मैंने तुम लोगों को कहाँ पढ़ाई थी TMJ पढ़ते हुए? Mandible. क्या चीज मैं कल दिखा रही थी उस पे lateral pterygoid इतना अच्छा नजर आता था. Mandible पे. मैंडिबल पे तो पढ़ा रही हूँ मैं 2 दिनों से, मगर मैंडिबल के किस एस्पेक्ट से पढ़ा रही थी? हमने Lateral देखा था. Action. No, we were studying the disc yesterday, और डिस्क का जो इंटीरियर पार्ट था उसमें से अपर हेड जो है कनेक्ट हो रहा था जाके, और जो लोअर हेड था वो जाके टेरिगोइड फोविया में अटैच हो रहा था. ये बात याद आती है? कल मैंने तुम लोगों को डायग्राम्स दिखाई हैं और मैं तुम लोगों को दिखा रही थी कि ये देखो, ये देख रहे हो, अब यहाँ पे देख लो कि डिस्क होती थी और डिस्क का इंटीरियर जो बैंड था वो अपर हेड के साथ कॉन्टिन्यूस हो जाता था. याद आता है पिक्चर? Yes, ma'am. And the lower head used to go and attach into the pterygoid fovea. Now these were points of insertion for the upper and lower head. Where it was arising from was different. So upper headed arises from the infratemporal surface and the infratemporal crest of the greater wing of the sphenoid. A greater wing of sphenoid यहाँ पे infratemporal crest होती है इसकी, जो कि infratemporal fossa की बाउंड्री शुरू हो रही होती थी. वहां पे हम पढ़ते थे कि infratemporal fossa की बाउंड्री behind the zygomatic arch
इस पार्ट से शुरू होती है, इंफ्राटेम्पोरल सरफेस ऑफ द इंफ्राटेम्पोरल crest of the greater wing of sphenoid, यहाँ पे पीछे होती है ये एरिया, ठीक है। greater wing of sphenoid bone यहाँ पे होती है zygomatic arch के पीछे, और वहाँ पे इसकी इंफ्राटेम्पोरल crest होती है। लोअर हेड जो है लैटरल टेरिगोइड प्लेट से अराइज होता है। लैटरल टेरिगोइड प्लेट अंदर होती है पीछे। जब हम नॉर्मा विजालिस को देखते हैं तब हम नहीं देखते लैटरल प्लेट्स अंदर की तरफ पैलेट के साथ नजर आ रही होती हैं पीछे से। अच्छा, ये जो टेरिगोइड प्लेट्स हैं ये कौन सी बोन का पार्ट है? Sphenoid. Sphenoid bone. Shabash, they're part of the sphenoid bone. So basically the upper and lower heads are both arising from which bone? Sphenoid. Sphenoid. बस लोकेशन बहुत डिफरेंट है। अपर हेड ये बाहर की साइड से अराइज हो रहा है और लोअर हेड जो है वो अंदर पीछे की तरफ लैटरल सरफेस ऑफ द लैटरल टेरिगोइड प्लेट से अराइज हो रहा है, ठीक है। याद रखना है कि दोनों जो टेरिगोइड मसल्स हैं वो लैटरल टेरिगोइड प्लेट से अराइज होते हैं। The lateral pterygoid arises from the lateral surface of the lateral pterygoid and the medial pterygoid arises from the medial surface of the lateral pterygoid, ठीक है। ये बात भी याद रख लो कि दोनों जो pterygoids हैं ये muscles lateral medial they arise from which plate? Lateral Lateral pterygoid. Yes, pterygoid. you don't have to get confused. You're not gonna think कि medial pterygoid plate से होता होगा lateral pterygoid. No, they're from the same plate, the lateral pterygoid, except from the lateral and the medial surfaces respectively. ठीक है, so the upper head, where does it arise from? Infratemporal surface. Infratemporal crest. Of the sphenoid bone. And where does it insert? Where does it insert? Anterior band of the Anterior band of the articular disc. Now the lower head, where does that arise from? lateral pterygoid. Lateral surface of lateral pterygoid. Lateral surface of the lateral pterygoid bone. And where does it attach? Insert Pterygoid fovea. Pterygoid fovea. pterygoid fovea, right. Okay, so its fibers pass backwards and laterally ये हैं, यहाँ से दोनों origins हुए में pass backwards and laterally to be inserted into a depression fovea and disc of the temporomandibular articulation, यूं आके ये attach हो जाते हैं। अब इससे क्या लगता है कि इसका क्या function होगा, because the fibers move towards where? Origin. origin. अब ये upper वाला यूं जाएगा, इस तरह करके जा रहा है, देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है, अपर वाला थोड़ा ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है towards the disc, from the infratemporal surface or the crest of the sphenoid bone to the disc. तो ये अगर यूं कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये किस में आ गया था, ये प्राइमरी एलिवेटर था ना एलिवेटर। अब लाइक टेम्पोरालिस भी एलिवेटर था, मगर टेम्पोरालिस के कुछ फाइबर्स पीछे से आ रहे थे, तो वो क्या कराता था? Retraction. क्या कराता था? अब इसके फाइबर्स आगे से आ रहे हैं, ये इस तरफ मोशन है फाइबर्स की, तो ये क्या कराएगा एलिवेशन के साथ साथ? Protrusion. प्रोट्रैक्ट, ठीक है। प्रोट्रैक्ट इज आगे जाना, रिट्रैक्ट इज पीछे जाना, तो ये प्रोट्रैक्ट टेम्पोरालिस के फाइबर्स यूं रन करते थे, यूं रन करते थे, यूं रन करते थे, और इसके फाइबर्स यूं रन करते हैं, ऊपर भी जा रहे हैं और थोड़ा सा आगे जा रहे हैं। नाउ यू कम ओवर हियर दूसरे लोअर फाइबर्स पे, लोअर फाइबर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड्स एंड स्ट्रेट है, थोड़ी सी स्ट्रेट एंड डाउनवर्ड्स है, तो ये भी प्रोट्रैक्ट भी कराएगा और इसका डिप्रेशन ऑफ द जॉ भी कराएगा, यानी जॉ को ओपन भी करेगा लोअर फाइबर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस? This is the pterygoid fovea जहाँ पे आके वो अटैच होता है। Then this is what you're seeing over here is ये डिस्क निकल रही है ऊपर से, ये सारा ऊपर से स्कल है, ये नीचे मैंडिबल है, ठीक है। ये मैंडिबल अटैच हुआ हुआ है अंदर मैंडिबुलर फॉसा में, और डिस्क के आगे से ये आपका लैटरल टेरिगोइड है। कैन यू टेल मी ये कौन सा पार्ट है लैटरल टेरिगोइड का? अपर है या लोअर है? Upper. यहाँ तक अपर है और ये वाला लोअर है, यहाँ तक अपर है और ये नीचे अंदर लोअर जा रहा है, नीचे जाके वो उसमें अटैच होगा यहाँ पे,
So this part is the lower, और ये वाला जो यूं करके रन कर रहा है, do you see कि ये थोड़ा सा यूं रन कर रहा है? If you pay attention, अब देखो ये क्या एरिया, ये जो हॉलो सा है, Orbit. Orbit. ऑर्बिट है। तो ये देखो ये ऊपर की तरफ, ये फाइबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इतने से थोड़े से फील होते हैं कि ये इंफ्राटेम्पोरल क्रेस्ट में जा रहे हैं। ये फाइबर्स थोड़े से यूं करके जा रहे हैं, ऐसे आता है नजर, समझ आती है? So this one is going to your, these are the lower fibers and these are the upper fibers. Acha, what is this? Styloid. Light process. Styloid process है, stylomandibular ligament निकल रहा है। Actions of the lateral pterygoid assists an opening with the suprahyoid muscles. We know right lateral pterygoid and right medial pterygoid turns the chin to left side as part of the grinding motion. When the medial and lateral pterygoids of two sides act together, they protrude the mandible. ठीक है, जब medial और laterals together act करते हैं, so they protrude the mandible. The upper head is involved in chewing, and the upper head is also involved in closing of the jaw. ठीक है, ओपनिंग ऑफ द माउथ में लोअर हेड है और ओपनिंग ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द माउथ में अपर हेड है, और राइट साइड के जो लैटरल और मीडियल टेरिगोइड्स हैं वो चूइंग और लेफ्ट साइड को मूवमेंट कराते हैं, ग्राइंडिंग मूवमेंट, ठीक है, ऑपोजिट साइड की मूवमेंट कराते हैं। पैल्पेट करने का तरीका लिखा है, यू कैन गो थ्रू इट। Medial pterygoid muscle. Now the medial pterygoid muscle is a thick muscle. It arises from the lateral pterygoid plate. But what surface of the lateral pterygoid plate? Medial section. Medial surface of the lateral pterygoid plate, and it used to insert where? कहाँ हमने पढ़ा था कि insert करता था? Angle of mandible. Angle of the Medial mandible. base angle of mandible. यहाँ पे कौन सा muscle insert करता है? Mylohyoid. Mylohyoid. ठीक है, और यहाँ पे ये वहाँ पे lateral pterygoid. Temporalis. lateral pterygoid, यहाँ पे Temporalis. 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 शाबाश, यहाँ पे बिल्कुल नीचे Anterior belly of Digastric. digastric. anterior belly of the digastric, anterior belly of the digastric, ठीक है। ये protrusion जो थोड़ी सी है बोनी सी, इसको क्या कहते हैं? ये जो टूथ लाइक स्ट्रक्चर है, Lingula. लिंगुला है, और इसके साथ कौन सा फोरामेन है? Mandibular foramen. मैंडिबुलर फोरामेन। और ये क्या है? ये कौन सा ग्रूव है? Mylohyoid. माइलोहाइड ग्रूव। इसको क्या कहते हैं? Mandibular notch. Notch. Mandibular Mandibular notch. notch. That's right. So the nerve supply of the medial pterygoid was from the main trunk of the mandibular nerve, और ये जो main trunk की medial pterygoid थी, ये और किसे supply करती है? Tensor villi. Tensor villi palatini and tensor tympani. Tensor villi palatini and tensor tympani. Blood supplies pterygoid branch of the second part of the maxillary artery, and then the functions are elevates the mandible, closes the jaw, helps in side-to-side movement. Guys, have you done the maxillary artery till now? Maxillary artery is, I think, part of the second substage, or is it part of what substage is it a part of? Samin, कौन सी substage में लिखवाई थी मैंने? Check that and tell me. Second substage की part है. Ma'am. Yes, I think so, ma'am. It's part of second substage. All right, confirm this अगर वो second substage की part है, and prepare that too, ठीक है? Maxillary artery के parts of maxillary artery का मैंने तुम लोगों को बताया हुआ है, तो table है PD में और KLM में। जो simple लगता है table, उसे थोड़ा सा simplify करके उसे उसी तरह present करना होता है। Maxillary artery पे questions आ जाते हैं, ठीक है? Functions: it elevates the mandible, closes the jaw, and helps in side-to-side movement. ठीक है, we know this. Yeah, again, this elevates the mandible because look at this muscle over here. ये वाली picture नजर आ रही है? ये तो आपका temporalis ऊपर coronoid से चला गया, ये fovea से lateral pterygoid चला गया, ये masseter चला गया ऊपर zygomatic cord से. This is your medial pterygoid. It's
कमिंग फ्रॉम द एंगल और वो जाके अटैच होगा अंदर पीछे लैटरल टेरिगोइड प्लेट तक। तो ये क्या करेगा, जब ये इस तरफ खींचेगा ओरिजिन की तरफ, तो ये क्या करेगा कि ये जब लैटरल टेरिगोइड के साथ काम करेगा तो प्रोट्रैक्ट भी कराएगा, ठीक है, और ये एलिवेशन भी कराएगा और साइड टू साइड मूवमेंट भी कराएगा, ठीक है। मीडियल टेरिगोइड और लैटरल टेरिगोइड्स मिलके साइड टू साइड मूवमेंट कराते हैं, जो आप जॉ को लेफ्ट एंड राइट मूव कराते हैं। बिकॉज व्हेन दे मूव द जॉ दिस वे, तो जॉ राइट साइड के करेंगे तो लेफ्ट तरफ जॉ जाएगा, जब लेफ्ट साइड के दोनों एक्ट करेंगे तो राइट साइड पे थोड़ा सा जॉ आएगा। So that's your side to side movement. This is how you palpate it clinically. All right. These are things that you should know. Okay, just write them down. I'm not giving you this as the assignment, but you should know these things. I've given this as an assignment before. You should know how to tabulate them. You should know their clinicals. Trigeminal neuralgia पता होना चाहिए, define trismus and one. Now, इसमें कोई doubt तो नहीं है अब? Ma'am. थोड़ा सा मैं हायोइड बोन शुरू कराना चाहती हूँ। हायोइड मसल्स नहीं कराऊंगी, बोन करा देती हूँ आज, ठीक है। हायोइड बोन ये टाइनी सी ऐसी बोन है दैट इज ओवर हियर अबव द थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज है, ये हायोइड और बीच में क्या है इनके? क्या है? Thyrohyoid cartilage membrane. थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है, ये थायराइड कार्टिलेज है, ये हायोइड बोन है, ये थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे मैंडिबल के लेवल पे आ जाती है। अगर इसने तो ऊपर नेक की हुई ना, व्हेन यू पुट द नेक डाउन तो मैंडिबल के साथ ही आ जाती है। जहाँ मैंडिबल की बेस टच हो रही होती है वहाँ पे बस हायोइड उसके नीचे से शुरू हो जाती है। In a suspected case of murder, fracture of the hyoid bone strongly indicates throttling and strangulation. ठीक है, मर्डर में फ्रैक्चर जो है, इफ यू स्ट्रैंगुलेट समवन, तो ये वाली बोन नॉर्मली वीक सी होती है और ये फ्रैक्चर हो जाती है। It is a U-shaped bone situated in the anterior midline of the neck between the chin and the thyroid cartilage. At rest, it lies at the level of the third cervical vertebra behind and the base of mandible in the front. यानी जब रेस्ट पोजीशन पे होगा, हेड नीचे होगा, तो बेस ऑफ मैंडिबल पे आगे होगा और पीछे वाली पोजीशन कॉरेस्पॉन्ड करेगी थर्ड वर्टेब्रा से। It is kept suspended in position by muscles and ligaments. ठीक है, पोजीशन में से कौन रखता है? मसल्स एंड लिगामेंट्स रखते हैं। सेम वो इन द मैंडिबल, मैंडिबल को कौन कनेक्टेड रखता है स्कल के साथ? मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं। जो 4 लिगामेंट्स तुम लोगों ने उसके पढ़े थे और उसके जो हमने अभी मसल्स पढ़ लिए हैं, ये मसल्स और लिगामेंट्स हैं जो मैंडिबल को कनेक्टेड रखता है हायोइड के साथ भी और ऊपर से स्कल के साथ भी। Provides attachment to the floor of the mouth and the tongue above, to the larynx below, and the epiglottis and the pharynx behind. Now the mandible, mandible कौन सी दो चीजों से मैंने बताया अटैच हुआ हुआ होता है? Mandible. Muscle ligament. Muscles and ligaments. हाँ, मगर कौन सी दो जगहों से अटैच हुआ हुआ होता है? कल से और कल से और हायोइड से। तो जो हायोइड इंस्टेड है ना, हायोइड इज अटैच्ड टू द टंग अबव, larynx below, epiglottis and pharynx behind. Hyoid इन सारी जगहों से connected है। Also to the mandible, which they haven't mentioned, मगर again mandible would become a part of the tongue. ठीक है, so the tongue above, the larynx below, epiglottis and the pharynx behind. So early life में जो है lateral part of the body is connected to the greater cornu by the core by cartilage, और after midlife जो है वो join हो जाते हैं। मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है। अच्छा, this is the structure of the U-shaped bone. ठीक है, इसके अंदर बीच में ये आपकी body होती है, ये आपके lesser horns हैं, ये lesser cornu है, और ये आपके greater horns हैं, ये greater cornu है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अर्ली एज में ये कार्टिलेज होती है और लेटर ऑन मिड लाइफ तक जो है ना ये सारी बॉडी के साथ वो हो जाती है, यूनिफाई हो जाती है थ्रू बोन। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर। Now it also has certain borders and medial border and the upper surface and the lower surface। जिस तरह हमने सारी
उसके लिए पढ़ी थी ना for the mandible the same way. So body के अंदर we have some transverse ridges जो कि U run कर रही होती है और बीच में एक median ridge होती है. फिर लेसर कॉर्नो यहाँ अटैच होता है और ग्रेटर कॉर्नो होता है. ग्रेटर कॉर्नो को जब आप स्टडी करते हैं तो उसके मीडियल बॉर्डर्स और लैटरल बॉर्डर्स होते हैं. जैसे मैंडिबल की थी ना मीडियल साइड थी और लैटरल साइड थी, इसी तरह इसका मीडियल साइड और द लैटरल साइड होती है. This is how the hyoid is placed. These are very basic things. Development is key. You should know. Maybe they ask it sometimes in the gross का paper भी. Second pharyngeal arch होता है superior part of the body और lesser corner second pharyngeal arch से, और third arch है lower part of the body और greater corner third pharyngeal arch से derive होता है. I think you do it in embryo. Gives attachment to the supra infrahyoid muscles and the thyrohyoid membrane. And कौन सा मसल है येलो वाला? चलो लिखा हुआ है. Digastric acid. It arises here from where? Digastric fossa. And attaches where? Mastoid. ये बीच में हम इसे क्या कहते हैं? पहली होती है. Pulley. Pulley, the digastric pulley, and this is your stylohyoid. ठीक है? So the digastric, the stylohyoid, these are two of the suprahyoid muscles that they're showing you. किस तरह आके वो attach हो रहे हैं hyoid bone पे. ठीक है? This diagram is very 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 important for your exam. Obviously आप इतना टाइम इस पे नहीं ज़ाया करोगे again because as I said smart study इस वक्त जो है कोई draw करने को नहीं कहेगा, मगर in the exam ये most definitely draw करने को आ सकता है. So you should know कि कौन से muscles और कौन से ligaments और कौन सा fascia कहाँ पे attached है. ठीक है? So this should be on your fingertips और lesser corner पे आके stylohyoid ligament लगता है. And if you know these diagrams, then you would also know कि अगर MCQs में कोई पूछ ले lesser corner पे कौन सा आके ligament लगता है, that's your stylohyoid. Greater horn पे कौन से दो muscles run कर रहे हैं? It's your middle constrictor and your अच्छा hyoglossus. दो muscles हैं, middle constrictor और hyoglossus, जो कि run करते हैं on the greater corner पे आके attach होते हैं. So these are things that you should know कि कहाँ पे कौन से muscles attach हो रहे हैं. Muscles को we will look at them tomorrow. ठीक है? Muscles of mastication we can do them tomorrow. किसी के कोई questions हैं? Guys, any questions? Do you guys have any questions? Do you see my screen? Yes, ma'am. Suprahyoid muscles का नाम सिर्फ याद कर लेते हैं. My gut seems damaged or whatever. What is it? Yeah, it's damaged. My gut seems damaged. तो वो कौन से हैं suprahyoid muscles? Wait a second. Mylohyoid. Hylohyoid, geniohyoid, stylohyoid, digastric. Stylohyoid muscles. So the mylohyoid arises from where? Mylohyoid arises from where? Mylohyoid line से. On where? Mylohyoid line where? Medial body of Mandible. mandible. Medial body of mandible. Okay, and the geniohyoid arises from where? Genial tubercle. Genotubercle. Upper or the lower one? Lower. Lower. Lower Lower one. man. And the stylohyoid arises from where? Styloid process. Styloid process. Digastric. Digastric fossa.
ठीक है, you have to know this and then you have to know कि ये hyoid bone पे exactly कहाँ attach होता है. You know the origins exactly, but you need to know the insertions too. Can we look at them? इतना कोई मुश्किल तो है नहीं, किया हुआ भी है. ये देखो, ये रहे सारे. ठीक है, ये सारी वही बातें हैं जो तुम लोगों को पता है origin वाली. ठीक है, इंसर्शन वाली क्या बातें हैं? सिर्फ 3 बातें याद करनी. ये भी पता है तुम लोगों को, ये भी पता चल जाएगा अभी. ठीक है, इनर्वेशन तुम लोगों को पता है. माइलोहाइड इज नर्व टू माइलोहाइड. जीनियोहायोइड इज वाया हाइपोग्लॉसल. C1 वाया हाइपोग्लॉसल. याद है जब वो कह रहे थे तुम लोग कहाँ पढ़ाई है? सर्वाइकल प्लेक्सस. हाँ, C1 वाया हाइपोग्लॉसल जीनियोहाइड को देता है और किसे देता था? like this. Thyroid. बता नहीं, you guys should know now. सेकंड ये सर्वाइकल प्लेक्सस आ रहा है ना इसमें, इस सब स्टेज में. Yes, ma'am. हाँ, सर्वाइकल प्लेक्सस जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर ड्रॉ करने को नहीं आएगा तो एनलिस्ट करने को आ सकता है, न्यूमरेट करने को आ सकता है. एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं. So C1 via hypoglossal was the geniohyoid. Stylohyoid is from the pre-parotid branch of the facial nerve. जब हमने facial nerve की थी तो उसमें से stylohyoid निकलती थी. डाइगैस्ट्रिक हमने पढ़ा था, जो एंटीरियर बेली थी वो इसके साथ ही आ जाती थी ना. इस तरह की ये माइलोहाइड को भी सप्लाई करता था, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक को भी करता था. सो एंटीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक एंड नर्व टू माइलोहाइड इससे हो जाती हैं. और पोस्टीरियर बेली जो है दैट इज फ्रॉम द फेशियल नर्व. सो 2 फेशियल नर्व्स हैं, स्टाइलोहाइड एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ द डाइगैस्ट्रिक. याद है जब हम फेशियल नर्व पढ़ रहे थे और फिर वो निकलता था फ्रॉम द टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द फेस, और फिर वो ये 2 ब्रांचेस देता था बिहाइंड द ईयर. याद आती है ये बात? अब मुझे फेशियल नर्व का मेरे पास फेशियल नर्व हमने कौन से सब स्टेज में पढ़ी है? First substage. Picture for this I remember. ये देखो, स्टाइलोमास्टोइड प्रोसेस से, नहीं, this isn't the one. Better picture, where is it? This here. यहाँ से यूँ निकलता था, पोस्टीरियर ऑरिकुलर सेंसिटिव क्या कहते हैं, सेंसरी ब्रांच देता था और फिर 2 मोटर ब्रांचेस देता था बिफोर इट्स फाइनल टर्मिनल ब्रांचेस जो थी, नर्व टू डाइगैस्ट्रिक एंड नर्व टू स्टाइलोहाइड. ये वाली बात याद आती है? Yes, ma'am. मोटर रूट बड़ी सी थी, सेंसरी छोटी सी थी. पहली ग्रेटर पेट्रोसल थी, फिर वो जाके उस गैंग्लियन में चली जाती थी और क्या बनाती थी? लेसर पेट्रोसल के साथ बन के मिलके Deep. Pterygoid canal. नर्व ऑफ द टेरेगॉइड कैनाल. ठीक है, फिर नर्व टू स्टेपिडियस निकल जाती थी जो कि ईयर में जाती थी. कोर्डा टिम्पनी निकलती थी जो कि लिंगुअल नर्व के साथ जॉइन होकर टंग को सप्लाई करती थी. पोस्टीरियर ऑरिकुलर थी एंड दीज टू. So this is from this here, and this nerve to digastric is to the posterior belly of the digastric. Okay. Yes, ma'am. Appreciate if someone doesn't play music right now. We've like 8 minutes left. आखिरी 8 मिनट में मुझे गुस्सा ना दिलाओ. So these were the ones they were rising from here. They were inserting here. जो माइलोहाइड थी वो माइलोहाइड राफी and body of hyoid, intermediate tendon to body and greater horn of hyoid. ठीक है, तीनों बॉडी पे ही जाती है. To simplify everything for you, सारे सुपर डाइगैस्ट्रिक मसल्स हैं वो सारे कहाँ जाते हैं? बॉडी ऑफ हायोइड पे जाते हैं. ऑरिजिन्स उनके तुम लोगों को पता है. इनर्वेशन पता चल गया. जीनियोहायोइड किससे था? Genial tubercle. Hypoglossal nerve. Hypoglossal. C1 via the hypoglossal. The stylohyoid and the posterior belly of digastric was by
Facial nerve. Facial nerve. Anterior belly and the mylohyoid was by Inferior elbow. nerve to mylohyoid. Nerve to mylohyoid. ठीक है, mylohyoid का क्या फंक्शन है? सबका एक फंक्शन तो है, elevates, elevates and elevates. ठीक है, सब elevate करते हैं. और mylohyoid की क्या खास बात थी? हमेशा जब हम इसे पढ़ते थे, मैं क्या कहती थी इसके बारे में? Floor of the mouth. muscle. It was the floor of the mouth. ठीक है, floor of the mouth थी, तो obviously in a way वो floor of mouth को भी elevate करता है. हायोइड को एलिवेट करता है, फ्लोर ऑफ माउथ को एलिवेट करता है, टंग को एलिवेट करता है. इन तीनों चीजों को एलिवेट करता है फ्लोर ऑफ माउथ को एलिवेट करते हुए. जीनियो हायोइड, जीनियल ट्यूबरकल तक जाता था हायोइड बोन से, तो जीनियल ट्यूबरकल एंटीरो सुपीरियरली था. ठीक है, सुपीरियर तुम लोगों का मैंडिबल में जो जीनियल ट्यूबरकल है वो आगे या हायोइड बोन आ गया? अभी हाथ लगा के अपने ऊपर देखो नेक में कि हायोइड बोन पीछे और जीनियल ट्यूबरकल आगे है, ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. Obviously वो Yes, ma'am. superiorly pull करेगा, pulls the hyoid anterior superiorly and it shortens the floor of the mouth. ठीक है, और पीछे से फेरिंग्स को बड़ा कर देगा. जब वो आगे खींचेगा इस सब को, तो पीछे से फेरिंग्स जो है उसमें खाने की जगह ज्यादा हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा. इस सब का कंबाइंड इफेक्ट है आगे खींचने का, इसे कि पीछे फेरिंग्स बड़ा हो गए. ठीक है, then you have the stylohyoid. Just bear with me just like 3 more minutes to do these two and then I'll stop. Okay, the stylohyoid elevates and retracts the hyoid. How अब stylohyoid से पीछे है या आगे था styloid process? पीछे है, तो उठाएगा भी और पीछे लेके जाएगा. ठीक है, और उल्टा काम करेगा इससे. ये शॉर्टन करा था, तो ये क्या कर रहा है? Elongates. Elongate करेगा. This makes sense, guys? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. इसका मतलब है ये elongate करेगा तो ये फेरिंग्स को भी नैरो कर देगा. ठीक है, पीछे लेके जा रहे हैं तो नैरो फेरिंग्स भी नैरो हो जाएगा. डाइगैस्ट्रिक जो है वो इंफ्राहायोइड मसल्स के साथ काम करता है. डिप्रेसेस द मैंडिबल अगेंस्ट रेजिस्टेंस, elevates and steadies the hyoid during swallowing and speaking. ठीक है, अब इसका याद रख लो कि हमें पता है कि ये डिप्रेस करता है मैंडिबल को. हमें पता था कि डाइगैस्ट्रिक वाज अ डिप्रेसर ऑफ द मैंडिबल आल्सो. सो इट डिप्रेसेस द मैंडिबल अगेंस्ट रेजिस्टेंस और हायोइड को एलिवेट कर लेता है ड्यूरिंग swallowing and speaking. Can we remember all this? Yes, ma'am. These are all depressors of the mandibles and elevators of the hyoid. Depressors of the mandible and elevators of the hyoid. बट जो ये दो हैं, एक आगे की तरफ ऊपर लेके जाता है, एक पीछे की तरफ ऊपर लेके जाता है. आगे की तरफ ऊपर लेके जाता है, फेरिंग्स को वाइड कर देता है, फ्लोर ऑफ माउथ को छोटा कर देता है. जो पीछे की तरफ ऊपर लेके जाता है, फ्लोर ऑफ माउथ को लंबा करता है और फेरिंग्स को छोटा कर देता है. ये बात इनकी याद रखना जरूरी है. और बिकॉज माइलोहाइड फ्लोर ऑफ माउथ है, तो फ्लोर को भी ऊपर करता है, टंग को भी ऊपर करता है, हायोइड को भी ऊपर करता है, सब कुछ ही ऊपर लेके जा रहा है. डाइगैस्ट्रिक हमें पता है कि मैंडिबल को नीचे लाता है, हायोइड को ऊपर लेके जाता है. बस कोई कंफ्यूजन है इस टेबल में? No, ma'am. That's it for tomorrow. That's it for today, guys. किसी को अगर कोई सवाल है तो पूछ लो, otherwise I'm going to log off. Can I log off? You guys have any questions? कोई problem है? No, ma'am. No, ma'am. Alrighty then. Take care, guys. Allah Hafiz.